हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सही है राइट? आप सबको स्वागत है मेरे और आपके चैनल फैक्टोलॉजी विद सुष्मिता में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, सो रिसेंटली एप्पल इंडिया ने स्टार्ट किया है न्यू एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है राइट टू रिपेयर। बाय दिस प्रोजेक्ट you can easily repair your any manufacturer defects for your phones or your any electronic gadgets. But beforehand, it is also the pilot project of ISRO. अरे ये वो वाला इसरो नहीं है जो चंद्रयान 3 के लिए गया था। दिस इज इसरो। अगर चंद्रयान 3 के लिए कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सभी बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसरो, डू यू नो अबाउट इसरो? अरे मैं ही बता देती हूँ। इसरो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। सो है ना ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव। So, and the important current affairs for all exams, especially UPSC and state PCS. That is Project Amber, which is introduced by 3 important organizations. So, what are those 3 important organizations? Don't worry, let me explain. So, those 3 important organizations are Ministry of Entrepreneurship, Skill and Entrepreneurship, Web Service Organization, and Generation Foundation of India for 1500 learners, and 50% of them are women, which is great step, है ना? आपको क्या लगता है? कमेंट डाउन बिलो। ये 1500 लर्नर्स के लिए ज़रूर है, बट दिस इज़ प्रोग्राम फॉर 30,000 यूथ, एंड इन दिस 30,000 यूथ 50% ऑफ विमेन। अरे वेट, आप सबको पता है व्हाट इज़ अम्बर? अम्बर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? अम्बर स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन मिशन फॉर better employment and retention for the quality employment. So this is also and it is under the Sankalp program, which is also co-founded by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So this is 7-step skilling methodology for quality skilling. सो दोनों ही न्यूज़ आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द साइंस एंड टेक पार्ट। सो प्रिपेयर फॉर ऑल दोज काइंड अफेयर्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।